Islamabad's injustices in Balochistan are well documented. But with the onset of CPEC projects in the region, the human rights violations have only risen. Thousands of Baloch people have disappeared for opposing Chinese investments on their land. Balochistan, the land of the Baloch, has turned into the land of the disappeared. Situated in Pakistan's southwest is Balochistan, the land of the Baloch people. It is the largest and most resource-rich province of Pakistan. It is also the battleground for an independence movement for over 60 years. A movement that has pushed the Baloch people into a cauldron of human rights abuses. More than 5,000 people have gone missing in Balochistan. This includes the brother of Abdul Hamid Baloch, a 35-year-old factory guard who disappeared in July this year. All Abdul has left are photographs that show Pakistan authorities taking his brother away. His mother has stopped speaking. अगर किसी ने जुल्म किया तो उसको सज़ा दे दो, लेकिन हमारी माँ की क्या कसूर है, मेरी वालदा की क्या कसूर है, उसको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही। वो दिन रात अपने बच्चे के लिए रोते रोते अब उनकी हालत ऐसी होगी, वो बोलना उसने छोड़ दी। Abdul lives in the fear that he would be next. He hesitates in even talking about his plight, scared that he too might be picked up and dumped after being killed. मतलब बर्बादी है, तो मतलब कुछ भी हम क्या बयान नहीं कर सकते कि हमारे बलूचिस्तान में जो हमारे साथ जो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता, उनको ही पता होगा, लेकिन बर्बादी जैसी है। अब तो हम लोग इतने ही डरते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ बर्बादी है तो उनको पता चल जाए कि ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बर्बादी है, तो पता नहीं मुझे भी उठा के ले जाएं, मार के फेंक दें, इस तरह की। 27-year-old Hani Baloch never thought of herself as a dissident. But in May this year, just weeks before her wedding, Hani and her fiancé Naseem were picked up by Pakistani officials. The couple was accused of being part of a pro-independence terror outfit. They were tortured, electrocuted and hit with rifle butts. टॉर्चर करते थे, हमें चेयर पे बिठा के करंट भी मारते थे और मेरे पैर को, जो मेरे सीधा पैर है, इसे बंदूक के बट से मारता था। अभी भी मैं थोड़ी ज़्यादा चलूँ तो मुझे तकलीफ होती है, और मेरे सर पे भी बंदूक का बट मारा था, इसमें भी 6 टांके आए हुए हैं। Hani Baloch was released after 3 months, but there's no word on her fiancé. जितने लोग भी लापता किए गए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर वो मुजरिम है तो कानून आपके अपने हैं, अदालतें, जेल आपके अपने हैं, आप लाएं, हमारे वकील खड़े होंगे। अगर जुर्म उन पर साबित हुआ, आप उन्हें जो भी सज़ा रियासत का वो कानून देगी, हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह पाबंद सलासत रखना में मंजूर नहीं है। Thousands more have disappeared this year. The conflict intensified due to the China-Pakistan economic corridor. Billions of dollars of Chinese money is flowing into the region. But none of it is for the Baloch people. The jobs go to outsiders. The locals are pushed further into the margins. CPEC जो है उसने और उस पर जलती का तेल का काम किया, क्योंकि उसमें कोई भी हिस्सा बलूचिस्तान को नहीं दिया जा रहा। इवन लेबर जो है वो पंजाब से लाई जा रही है, या चाइनीज़ लेबर आके काम कर रही है। बलूच लेबर जो है उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा, उनको वहाँ पर काम नहीं दिया जा रहा, तो इससे और ज़्यादा नफरत फैल रही है। These people are fighting for the sovereignty of their land. In 2019, Baloch rebels stormed a luxury hotel overlooking a flagship CPEC project in Gwadar. And in June this year, Baloch insurgents targeted the Pakistani Stock Exchange, which is partly owned by Chinese companies. The attacks were claimed by the Balochistan Liberation Army, but it is the innocent civilians who have suffered the most. They get picked up by authorities on the slightest of doubt. Islamabad has unleashed a new wave of injustices to protect its business interests with China. It has turned Balochistan into the land of the disappeared. Bureau Report, WION, World is One.
Thank you for watching Gravitas on WION's YouTube channel. If you want to stay up to date with what's happening around the world, then subscribe to our channel and don't forget to like and share. Thank you very much for watching WION. World is One.